ओके, तो जैसे मैं बोल रही थी कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए इसके कॉन्टिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्शन करने का मतलब है हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. सो फॉर दिस थिंग वी हैव टू फिक्स सम थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो यहाँ पे उसी डायग्राम को फिर से यहाँ पे कुछ बोला गया है. सपोज ह्यूमिडिटी हाई लो के हिसाब से नहीं डिसाइड करके यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमिडिटी इज मोर देन 75% और लेस देन इक्वल टू 75%. यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू से भी दिखाया गया है यहाँ पे. सो क्या लिखा क्या है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी इज वेदर इज सनी बट ह्यूमिडिटी सपोज इट्स गिवन इन कॉन्टिन्यूअस वैल्यू. And if it is more than 75%, then there will be no gameplay. Otherwise, if the humidity is less than equal to 75% and weather is sunny, then the game will be played. So in this way, decision tree is made for continuous attribute value. तो यहाँ बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ये जो डिसीजन ट्री हम लोग क्रिएट किए हैं, देयर मे बी मल्टीपल डिसीजन ट्री, राइट. बहुत सारा डिसीजन ट्री क्रिएट हो सकता है. और जैसे कि हम लोग यहाँ पे वेदर एट्रीब्यूट को सबसे पहले लिए हैं, तो हम लोग ह्यूमिडिटी एट्रीब्यूट को भी पहले ले सकते थे या विंड एट्रीब्यूट को भी पहले ले सकते थे. तो कुछ भी को हम लोग किसी ऑर्डर में कंसीडर कर सकते थे. कौन सा ऑर्डर में बेसिकली हम लोग कंसीडर करेंगे और ट्री कैसे बनेगा, तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा. बेस्ड ऑन वी हैव टू क्रिएट ऑल पॉसिबल ट्रीज and further we have to check which path is the best path for the prediction. Okay, so this is all task we have to do. तो यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या बोला गया है, pick the best attribute और feature. the best attribute और feature. तो best कैसे हम लोग को पता चलेगा, best attribute one which best split or separate finds data. best split का मतलब क्या हुआ है कि कोई एट्रीब्यूट का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए ऑलवेज उसका टारगेट लेवल सेम देता है. जैसे यहाँ वेदर का वैल्यू जब मेरा क्लाउडी मिल रहा है, वेदर का वैल्यू जब मेरा क्लाउडी मिल रहा है, हर बार मुझे क्या क्लास लेवल का वैल्यू क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है. आप नहीं देख पाओगे गिवन डेटा के लिए, गिवन मेरा ट्रेनिंग सेट है उसमें आप कभी नहीं ऐसा देखोगे कि वेदर क्लाउडी है फिर भी वहां पे गेम प्ले में नो लिखा हुआ है. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज डेफिनिट. इफ द वेदर इज क्लाउडी then the class level is always yes. So this is a best place. It is a very good split. That's why you have taken the weather first. But if there are multiple best split, in case of multiple attribute, तो किसको पहले लेना है, तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग को वी हैव टू कंसीडर ईच ऑफ देम. ठीक है. फर्दर क्या बोला गया है, आस्क ए रिलेवेंट क्वेश्चन क्या है कि ये पहले हम लोग वेदर को लिए हैं, फिर रिलेवेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वेदर, सनी, क्लाउडी और रेनी. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे डिसीजन मेक करना होता है हर एक नोड पे, या बोल सकते हैं यूजिंग हर एक attribute you have to make a decision. That's why the name is decision tree. And in every node you have to ask a relevant question. In humidity you have asked whether it is greater than 70% or less than equal to 70%. So these are the questions. Follow the answer path. So answer path, so after that we have to follow the answer path, go to step 1 until you arrive to your answer. So again you have to consider another best trick for further decision making if the state is not the best for any attribute. जैसे कि आप वेदर क्लाउडी के लिए हर बार yes वैल्यू आपको मिल रहा है, कभी भी no वैल्यू नहीं मिल रहा है. So you don't have to any other attribute after this cloudy because this is definite. But for sunny there is some confusion that there is yes gameplay, and for some of the sunny weather there is no gameplay. So this after considering the sunny attribute, after considering the sunny attribute, again if we consider the humidity, so for sunny weather as well as humidity greater than 75% we are getting no, and for weather sunny and for humidity less than 75% is giving us yes. So our path is
Here the path is what? Humidity weather. Here the path is wind, rainy. और बेसिकली यहाँ पे पाथ क्या है? ह्यूमिडिटी, सनी वेदर. यहाँ पे पाथ क्या है? विंड, रेनी वेदर. ऐसा करके हम लोग पाथ वैल्यू को निकालना होता है. सो बेस्ड ऑन द जो आंसर पाथ होता है उसका हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं. हर एक पाथ का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गेन we say that this will be our proper path for the prediction. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह दिया हुआ है. तो ऐसा करके गो टू स्टेप 1. मतलब अगर कोई फीचर या अगर कोई एट्रीब्यूट करेक्टली क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, देन वी हैव टू कंसीडर again another attribute, so that we have to go to step 1. that means pick another base attribute. जैसे वेदर के बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी पिक किया गया है. So that is your algorithm. Okay, expressiveness of your decision tree. तो यहाँ पे decision tree को कैसे एक्सप्रेस किया गया है? यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉब्लम डोमेन आपको दिया गया है. So you can see there are more than one decision tree. They have made more than one decision tree because whenever they started, they have considered different attribute at the starting. यहाँ पे A से स्टार्ट किया है, यहाँ पे B से स्टार्ट किया है. अगर इसको आप एक प्रॉब्लम डोमेन मानोगे तो इस सेट में कितना एट्रीब्यूट दिया है? 2 एट्रीब्यूट दिया है, A और B, और उसका प्रेडिक्शन वैल्यू क्या है? A एंड B. और यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करने से क्या रिजल्ट निकालता है वो तो हम लोग जानते हैं. सो इफ A is false and B is false, then एंड वैल्यू ऑफ दिस टू आर false. This is the AND operation of A and B. So if this is false and B is true, then we are getting false value, and so on. You can understand. So decision tree इसके रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही एट्रीब्यूट है. ठीक है, 2 एट्रीब्यूट है. तो 2 एट्रीब्यूट होने से हम कैसे decision tree मेक कर सकते हैं? So we can first we can consider A or we can consider B. So if this is considering A first, तो पहले A को consider कर रहा है. तो A का 2 वैल्यू होता है, एक का ट्रू वैल्यू, एक का फॉल्स वैल्यू. तो A का वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो A एंड B का वैल्यू, मतलब जो क्लास लेवल है, दिस टू आर ऑलवेज फॉल्स. हाँ, तो ये एक बेस्ट प्रेडिक्ट वैल्यू हो गया या बेस्ट स्प्लिट हो गया. दिस इज अ वेरी गुड स्प्लिट बिकॉज A वैल्यू फॉल्स के लिए ये जो टारगेट वैल्यू आपको ट्रू नहीं मिल रहा है. सो इन दिस वे this answer you are getting very definite answer. So if A is false, then always the class level is false. But there is a confusion. If A is true, then the answer may be true or may be false. If A is true, the answer may be false or answer may be true. So whenever A is true, so class level we have to take the help of B. True and B is false, then class level is false. Otherwise, if A is true, B is true, then class level is true. So you have to consider both the attribute for true value of A and true value of B. We are giving the true value. We are getting the true value. Otherwise, A true, B false. We are getting false. तो ऐसा करके अगर मैं एक पहले कंसीडर करती हूँ कि ये मेरा डिसीजन ट्री बनेगा और B को पहले कंसीडर करती हूँ तो ये मेरा डिसीजन ट्री बनेगा. तो सेम वे यू हैव टू कंसीडर फॉर मेकिंग द डिसीजन ट्री. ठीक है, अब कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना है, इसका आंसर हम लोग को मिलेगा इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने. वो हम लोग देखेंगे. अच्छा, यहाँ पे पहले डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे बेसिक बुलियन फंक्शन, एंड फंक्शन के लिए आपको कंस्ट्रक्ट किया है, और फंक्शन के लिए भी आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यहाँ से आप देख सकते हो यूजिंग और फंक्शन. ठीक है, तो you should see and you should understand how it is working. और XOR के लिए क्या हो रहा है देखो, XOR के लिए कैसे ये काम कर रहा है. XOR के लिए देखो यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट बेस्ड लिस्ट इसका नहीं है. एनी वन एट्रीब्यूट इट इज नॉट गिविंग एनी बेस्ड लिस्ट, है ना. क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि वैल्यू फॉल्स होने से मेरा जो टारगेट लेवल है दिस इज ऑलवेज सेम. नो, फॉर
A value false, it is once it is giving false, once it is giving true. B के लिए भी वैसे variation हम लोग को मिला, so we are not getting any best fit. So we have to consider all of them, all possible ways we have to consider. So if I pick the first attribute as A, if I get false value of A, then for the prediction of the class we have to consider B, because without the help of the both of the attribute we cannot predict the correct class है. तो यहाँ पे B का वैल्यू भी फॉल्स होने से यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट दे रहा है और ये क्लास लेवल दे रहा है फॉल्स, एंड B का वैल्यू ट्रू होने से आपका क्लास लेवल दे रहा है ट्रू. इन दिस वे इन XOR gate there is no best fit, so you have to consider all possible path, and you here if and they have started from A, in your case you can also start from B. B से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है. यहाँ पे क्या बोला गया, लेट्स प्रोड्यूस अ डिसीजन ट्री परफॉर्मिंग XOR फंक्शन यूजिंग 3 एट्रीब्यूट. 3 एट्रीब्यूट लेके भी सपोज XOR परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट था, यहाँ पे ABC 3 को कंसीडर कर रहा है या X1 X3 को कंसीडर कर रहा है. You can see the number of node is increasing exponentially. ठीक है, तो यहाँ पे कितना नोड था आपका, 2 एट्रीब्यूट के आपका एट्रीब्यूट के लिए आपका नोड कितना हुआ, 1 2 3 नोड आपको मिला है, और ये तो आपका डिसीजन लेवल है. सो दिस आर द लीफ. और इसके लिए अगर आपका 3 एट्रीब्यूट होता है तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स है कितना, 1 2 3 then 4 5 6 7. So if I want to generalize these things, so we will get for each level we are getting 2 possible ways. So if and each of the possible way we are getting from one node or one attribute. So if there are n number of attributes, then at most number of nodes would be generated, that is 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus 1, this is the number of node. And if you want to relate this thing with the given problem, you can see that is the equation is satisfying for all the cases. यहाँ पे 2 to the power मतलब हो गया आपका 8 minus 1 मतलब 7. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नोड्स है. कब, अगर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, ये डॉलर का मतलब कुछ नहीं है, दिस आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग सम वैल्यूज. ठीक है, कुछ यहाँ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है n से, इसीलिए यहाँ पे डॉलर लगाया हुआ है और कुछ नहीं. तो देयर आर 2 to the power n नंबर ऑफ नोड अप्रॉक्स. अगर आपके पास 100 एट्रीब्यूट होता है, 100 एट्रीब्यूट होता है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नोड होने का कितना चांसेस है, दैट इज 2 to the power 100. So this is a huge number. So minus 1 is a negligible value. So that we have written 2 to the power in the decision tree. So the tree requires exponential number of nodes in the worst case. तो जितना आपका एट्रीब्यूट बढ़ेगा उतना आपका ट्री का स्ट्रक्चर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा. दैट विल बी मच मोर चैलेंजिंग, राइट. तो ज्यादा चैलेंजिंग ये हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना है, so this is the worst case of your problem. Okay, so it can represent boolean operation using decision tree, but what other kind of function can we represent? And if we search over the various possible decision tree to find the right one, how many decision tree do we have to worry about, है ना. तो बहुत सारा ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉब्लम का वो बहुत ज्यादा होता है. तो डिसीजन ट्री विल बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड so many also. Let's answer the question by finding out the possible number of decision tree we can generate given in different attribute. Since the truth table can be translated into decision tree, we will form a truth table n attribute as input. तो यहाँ पे कुछ n attribute input वाला एक टेबल बनाया है जिसमें n number of input है. Yes, n number of input मतलब n number of attribute है. So x1 से xn तक इसका attribute value है. Then each of the attribute value they are defining with true value and false value. And output level there are some output level. So the above truth table has 2 to the power n rows. Okay, 2 to the power n rows, so many rows. Okay,
which represents a possible combination of the input attribute. And since each node can hold a binary value, the number of ways to fill a value for this decision tree is 2 to the power 2 to the power n, है ना? तो डिसीजन ट्री में कितना वैल्यू आएगा 2 to the power n to the power 2 मतलब 2 to the power 2 to the power n। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक जो लेबल है या एट्रीब्यूट वैल्यू है वो कितना हो सकता है, आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो कितना पॉसिबल वैल्यू है हर एक का, 2 पॉसिबल वैल्यू है। तो इन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा, 2 to the power n पॉसिबल वैल्यू होगा। मतलब इस टेबल को फिल अप करने के लिए हम लोग का 2 to the power n पॉसिबल वैल्यू से हम लोग इसको फिल अप करते हैं। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रोज आर 2 to the power n। Hence, for each of the 2 to the power n, there is a possibility to choose the attribute one after another in 2 to the power possible ways, 2 to the power 2 to the power n possible ways. You should analyze in your way, and if you want to relate, if you relate this with small problem, जहाँ छोटा सा टेबल है जैसे एक्सॉन या एंड गेट के लिए हम लोग जो टेबल बनाए थे और प्रिसिशन ट्री बनाए थे उससे आप रिलेट करोगे तो आपको मिलेगा यस द नंबर ऑफ रियल वैल्यू, नंबर ऑफ वे टू फिल द वैल्यूज इन द डिसीजन ट्री में जो वे में हम लोग टेबल नहीं लेते। हाँ, डिसीजन ट्री में डिसीजन ट्री का जो एक्सपांशन हम लोग को मिलेगा दैट विल बी 2 to the power 2 to the power n, right? So thus the space of decision tree is very high. The hypothesis space of decision tree is very expensive because there are a lot of different functions it can represent, but it also means so one need to have a clever way to search the base tree। तो यहाँ से हम लोग को base tree find out करना। So this is the understanding of the problem। अभी हम लोग solution discuss नहीं किया, हम लोग सिर्फ problem को discuss किया और कुछ decision tree boundary के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे कुछ क्लास लेवल दिया हुआ है, this is not so visible। So if this is your what can I say, if this is your decision space मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग ये जो एट्रीब्यूट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एट्रीब्यूट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इस तरह हम लोग इसको कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू 0 होने से आप लेवल आ रहा है 0 और इसका टारगेट लेवल greater than 0 होने से there are some y value using which we can predict x का वैल्यू लेस देन 0 होने से, यहाँ पे लेस देन 0 लिखा होना चाहिए था, x का वैल्यू लेस देन 0 होने से हमारा ये जो प्रेडिक्शन वैल्यू हो रहा है वो डेफिनेटली 0 हो रहा है। So this part is considering based on this x value which is less than 0। ठीक है, लेस देन 0 से ये हम लोग ले रहे हैं। ये जो पार्ट है इसमें डिसीजन लेने के लिए मुझे y वैल्यू चाहिए, तो y वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, मेरा ये स्पेस हम लोग कंसीडर करेंगे, स्पेस 1 को कंसीडर करेंगे 1 when decision value is 1, so we will consider this space, otherwise when y value is 0 then we will consider this place। तो मेरा एक्चुअली डिसीजन कैसे हो रहा है, डिसीजन we are making decision based on x, we are making the decision this part that अच्छा ऐसे अगर ना करके मैं डायग्राम में अगर आपको बताती हूँ तो देखते हैं। तो पहले based on this x we are taking decision of this portion, and for the remaining portion this one we are taking help of y, and based on the y value, if y is greater than 0 we are taking this one, and if y is less than 0 we are taking this one। okay, so decision space is further dividing। तो डिवाइड कैसे हुआ, ऐसे डिवाइड हुआ उसके बाद ऐसे डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये पहले पार्ट था, ये पार्ट डिसाइड करने के लिए x ही काफी था, फिर y पार्ट का हेल्प लेके हम लोग ये दो
Okay, so we are predicting this two part based on the value of x, not based on the value of y. So जो भी हो, you can see that if this is our decision space, then this attribute are dividing our decision space. Decision tree learning algorithm. यहाँ पे और कुछ वैल्यू बोला गया है. Calculating the information gain. So this is a part we are supposed to discuss. इंफॉर्मेशन गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाए. ठीक है, तो मैं बोली थी कि इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग सही पाथ जो होगा वो चुनेंगे among all possible path, है ना, and all possible trees. So let's calculate the information gain. Information gain कैसे कैलकुलेट किया जाता है? As stated earlier, information gives a statistical property that measure how well a given attribute space the training example according to the target classification. तो target classification के ऊपर डिपेंड करके जो मैं attribute को चूज की हूँ जो कि सेपरेट कर रहा है सैंपल को, वो कितना सही हम लोग चूज किए हैं उसका मेजर है ये इंफॉर्मेशन गेन. ठीक है, कोई एट्रीब्यूट के लिए 50-50 डिवीजन होता है. 50-50 डिवीजन होता है मतलब क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमिड होने से प्ले होगा, ह्यूमिड नहीं होने से गेम प्ले नहीं होगा. सो दिस इज द 50-50 डिवीजन. तो ऐसा अगर एट्रीब्यूट आपके पास है जिसके 50-50 डिवीजन के लिए हम लोग को एग्जैक्टली टारगेट वैल्यू मिल जा रहा है विदाउट एनी वेरिएशन, और उसमें कुछ अलग तो क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेट वैल्यू कुछ मिल रहा है टारगेट वैल्यू, देन दिस इज अ वेरी गुड predictor or good attribute to use in the decision tree. तो decision tree में अगर कोई अच्छा attribute मिल जाता है जो एकदम exact split करता है मेरा decision space को या classify करता है decision space को, then the information gain for that attribute becomes very high. है ना, इसके लिए बहुत high होता है. तो वो calculate करना है. In this figure below we can see attribute with low information gain splits the data relatively evenly, and as a result it does not bring us any closer to a decision, whereas an attribute with high information gain splits the data into groups with an uneven number of positive and negative as well, and the result helps in separating two from each other. तो इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेके देखते हैं. टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन गेन प्रिसाइजली वी नीड टू डिफाइन अ मेजर टू कॉमनली यूज्ड इन इंफॉर्मेशन थ्योरी कॉल्ड एंट्रोपी. तो एंट्रोपी के बारे में हम लोग को पहले जानना है. तो एंट्रोपी इज अ मेजर. ठीक है, एंट्रोपी इज अ मेजर मतलब एंट्रोपी से हम लोग देखते हैं कि कितना इम्प्योरिटी है ग्रुप ऑफ एग्जांपल में, कितना इम्प्योरिटी है मतलब कितना नेगेटिव क्लास और कितना पॉजिटिव क्लास है, तो वो हम लोग देखते हैं. तो इंफॉर्मेशन गेन के बारे में पहले भूल जाओ, पहले एंट्रोपी के बारे में सोचो. एंट्रोपी हम लोग हर एक एट्रीब्यूट के लिए जो कि नोड में रिप्रेजेंटेड है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेट द एंट्रोपी मेजर टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ एंट्रोपी. कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली इट डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी इज फॉर ईच ऑफ द, so summation of I 1 minus p into log 2 base pi, where pi is the probability of classification. Probability of classification. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है. So I will consider in the next day a better example to explain it. However, यहाँ पे जो बोला गया देखते हैं. Since the basic version of ID3 algorithm deals with the case of classification either positive or negative, we can define this entropy. तो यहाँ पे positive और negative class लेके इसको explain किया गया है. तो multiple class भी रह सकता है, but there we have considered here the what can I say, the positive and negative class. तो एक डिसीजन जो यहाँ पे लिया जा रहा है इसमें क्या दे रहा है आपको
तो यहाँ पे 2 नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रहा है और बाकी सारा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है. सो you want to predict your class level based on high information gain. So for some there is it's predicting or it is saying using this path you are getting more positive value and in this path you are getting more negative value. ठीक है. So यहाँ पे भी हम लोग इसके लिए भी कुछ एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए भी कुछ एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे. So what will be the entropy? So for each of the decision making here there is some positive class as well as negative class. So we have to consider both of them for calculation of this entropy. ठीक है. Pi is probability of the class. Is probability of the class. ठीक है. तो यहाँ क्लास का वैल्यू क्या है? माइनस. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ क्लास क्या है? पॉजिटिव क्लास है और नेगेटिव क्लास है. तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव क्लास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव क्लास है और कितना नेगेटिव क्लास है? माइनस माइनस 2 नेगेटिव क्लास है. तो 2 नेगेटिव 7 पॉजिटिव. टोटल नंबर ऑफ क्लास कितना हुआ? 7 + 2 is 9. So the probability of class, probability का यहाँ पे नेगेटिव क्लास का प्रोबेबिलिटी है 2 / 9 और पॉजिटिव क्लास का प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 / 9. तो प्रोबेबिलिटी का आप लोग कॉन्सेप्ट है उससे आप लोग जानते हो कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा. तो ऐसा कर एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेगा? दिस इज समेशन i 1 - p * log 2 base pi. ठीक है. तो समेशन i मींस i इज द क्लास i. मतलब ये क्लास लेवल के बारे में बोला गया है. तो one is positive class, another is negative class. So what we will do? 1 - p * log 2, 1 - p * log 2 for positive class, that is p positive, plus 1 - p * log 2 base pi for the negative class. And in this way you have to perform. तो कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे समेशन i यहाँ पे बोला गया है तो हम लोग इनको भी कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे इक्वेशन यही बोला गया है -p plus log 2p plus -p minus log 2p. एक पॉजिटिव क्लास के लिए बोला गया. तो इसको मैं क्लियरली यहाँ पे पेन में लिखती हूँ. तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एंट्रोपी ऑफ सम S means the division for some node, that is equals to -p plus log. इसका base है 2 because we are considering binary classification. अगर binary classification होता है 3 क्लास होता है तो यहाँ पे log base 3 हम लोग को लेना पड़ेगा. This is p and we are considering positive class here. Positive class. Again minus p, again minus p माइनस p. यहाँ पे क्या बोला गया है? माइनस log of base 2 p and the class level of minus class. नेगेटिव क्लास के लिए यहाँ पे बोला गया है. they are asking for the negative classes. Okay. तो यहाँ पे एंट्रोपी फिर कैलकुलेट किया है 9 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव वैल्यू के लिए. देखते हैं 9 पॉजिटिव वैल्यू और 5 नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है. तो इस क्लास के लिए तो 9 पॉजिटिव वैल्यू और 5 पॉजिटिव. लेट्स check the entropy is relative to Boolean classification is positive 9. कितना सैंपल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे कितना? yes 9
पॉजिटिव एग्जाम्पल है। टोटल अगर मैं इसको मिला के लेती हूँ तो 9 पॉजिटिव वैल्यू है, कितना नेगेटिव वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 no it is not properly saying anywhere। 14 boolean example हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं दिया है। whatever, based on the equation, if I want to find out for this one we know that for this one the total number of positive class are 7 1 2 3 4 5 7 और total number of negative class are 2। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव क्लास माइनस, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्लास माइनस पी। यहाँ पे माइनस पी का वैल्यू क्या है, माइनस पी का वैल्यू होगा 2/7 प्लस यहाँ पे साइन होगा माइनस प्लस log 2 base। okay, they are representing this for positive class, so यहाँ पे 2/7 हम लोग नहीं लिखेंगे, 7/9 लिखेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेरा सैंपल है 9, उसमें से 7 पॉजिटिव वैल्यू है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव क्लासेस आर 7/9, that is plus log 2 base number of probability of the positive class, that is 7/9 then minus नेगेटिव क्लास का प्रोबेबिलिटी कितना है 2 है, तो 2/9 माइनस log 2 बेस, वहाँ पे भी मेरा मिलेगा 2/9। ऐसे करके ये जो मेरा प्रेडिक्शन वैल्यू मिल रहा है, इसको कैलकुलेशन करने से मुझे मिलेगा एंट्रोपी, किसका एंट्रोपी मिलेगा, ये जो नोड है इस नोड का एंट्रोपी मिलेगा। ऐसे करके हर एक नोड का मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन द एंट्रोपी वी विल कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन। सो वी विल टेक अ प्रॉपर एग्जांपल, we'll take a proper example in the next day and we'll see how it is working. Okay. For every node they have calculated the entropy, parent node entropy of parent, entropy of child, and so on. After that they have taken the decision that where the information gain is high, जिस path के लिए मेरा information gain सबसे high होगा based on the इंफॉर्मेशन गेन के साथ एंट्रोपी का रिलेशन है, तो उसको फॉलो करके जहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन गेन हाई होगा वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन थिंग। So next I think I will consider another example where the proper explanation is given, then I will discuss the rest of the part. Okay, if you have any question regarding this one, then please ask, or I will leave something. And I can see 14 participants, but in chat box you have written only 4 roll number. So if you know anyone left, then please write your roll number. अगर कोई भूल गया है, छूट गया है, कुछ भी हो गया तो अपना रोल नंबर मुझे डालो।